हाय, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिस्टम मॉडल फॉर पॉलिसी एनालिसिस। पॉलिसी एनालिसिस के लिए जो सिस्टम मॉडल यूज होता है उसके बारे में मेनली हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस हैज़ बीन रिगार्डेड बाय डेविड ईस्टन एज अ ब्लैक बॉक्स। तो डेविड ईस्टन ने जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है इसको ब्लैक बॉक्स कहा है, विच कन्वर्ट डिमांड ऑफ द सोसाइटी इनटू पॉलिसीज। जो कि मेनली क्या करता है, जो डिमांड होती है सोसाइटी की उसको पॉलिसीज के अंदर कन्वर्ट करता है। While analyzing political system, David Stone argued that political system is that part of the society which is engaged in the authoritative allocations of value। तो जो political system है इसका मेन काम क्या है, ऑथोरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यूज। जो ऑथोराइज जो वैल्यू ऑथोराइज जो वैल्यू है, ओके, जो ऑथोराइज जो भी चीज़ें हैं उसको अलोकेट करना, ओके, उसको प्रदान करना टू द पीपल्स ऑफ द कंट्री। तो पॉलिटिकल सिस्टम का काम ये होता है कि जो भी रिसोर्सेस होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉपरली। ओके, सो इनपुट आर सीन एज अ फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो जो इनपुट मेनली लिया जाता है बाय द पॉलिटिकल सिस्टम, ओके, एंड दैट इनपुट इज गिवन, okay, by the individual or the group of people, okay, that is in the form of physical, social, economic and political, okay, and that input can taken by the political system, okay, so they receive into the political system in the form of both demand and support, okay। तो जो इनपुट होगा वो दोनों फॉर्म में हो सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिमांड और दी सपोर्ट, ओके। तो डिमांड आर, अभी डिमांड का क्या मतलब होता है, डिमांड आर द क्लेम मेड ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। डिमांड एक क्लेम है जो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्लेम किया जाता है बाय द इंडिविजुअल और द ग्रुप, ओके, इंडिविजुअल और ग्रुप द्वारा किया हुआ क्लेम ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। किस लिए क्लेम किया जाता है, ओके, टू अल्टर सम एक्सपेक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अंदर कुछ चेंज लाने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड, इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ पीपल वो कुछ क्या करते, वो अल्टर करते पब्लिक पॉलिसी को, ओके, नॉट दे अल्टर बट पॉलिटिकल सिस्टम विल अल्टर द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप, ओके, दे डिमांड टू द पॉलिटिकल सिस्टम टू डू or to alter some aspect of the public policy। So this is mainly the demand। The support of the political system is consist of rules, law, custom and provide a basic for the existence of the political community and the authorities। अभी हमने डिमांड देखा है, नाउ वी विल सी द सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, ओके, हम पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करेंगे बाय द रूल, फॉलोइंग द रूल्स, लॉ एंड कस्टम्स, ओके, दैट प्रोवाइड द that provide a basic for the existence of political community and authorities, okay। तो हमें जो भी पॉलिटिकल सिस्टम द्वारा हमारे लिए जो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, कस्टम जो भी, ओके, जो बेसिक चीज़ें हैं फॉर एग्जिस्टेंस फॉर द कम्युनिटी, ओके, होल कम्युनिटी और द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दैट एरिया, वी शुड फॉलो ऑल दिस थिंग। सो दैट इज मेनली वी आर सपोर्टिंग टू द पॉलिटिकल सिस्टम by following all these things। So support is rendered when individual or group accept the decision or the law, ओके। तो जब हम पॉलिटिकल सिस्टम द्वारा प्रदान किया हुआ या हमारे ऊपर इम्पोज किया हुआ रूल रेगुलेशन को एक्सेप्ट करते हैं बाय द इंडिविजुअल और द ग्रुप, ओके, सो दैट इज मीन वी आर सपोर्टिंग, ओके, वी आर सपोर्टिंग टू द पॉलिटिकल सिस्टम। सो सपोर्ट आर द सिम्बॉलिक और मटेरियल इनपुट। तो सपोर्ट हम एज अ सिम्बॉलिक भी कर सकते हैं और एज अ मटेरियल इनपुट, ओके, of the system, for example obeying law, paying taxes, okay, so paying taxes is the material input, okay, so even respecting the national flag, okay, that is symbolic mainly, so that constitute the psychological and material resource of the system। तो ये मेनली क्या है, एक टाइप का एक रिसोर्स है टू द सिस्टम, ओके, फॉर प्रोवाइडिंग और टू मेक द लॉ, ओके, और द पब्लिक पॉलिसी। So the input that is given to the public political system in two form, that is input in the form of demand, okay, that is the claim, okay, now and the second one is the support in the form of following the rule and regulations, okay, okay, and that may be symbolic or material, okay, so both
type of support we can provide. So at the heart of the political system are the institutions and actors for policy making. तो जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मेनली काम करते हैं पॉलिसी मेकिंग का. दिस इंक्लूड, अब इसके अंदर कौन कौन होते हैं पॉलिसी मेकिंग में, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेटर होता है, जज होता है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं. ओके, इन द सिस्टम version they translate input, okay, into output. So what input we provide? We provide input in the form of support and demand. Okay, input in the form of demand and support. Okay, so whatever demand and support that we will provide, that is converted into output through the public policy. Okay, so output then are the authoritative value allocation of the political system, and this allocation constitute what is called the public policy. Okay, or policies. तो जब ये हम इनपुट देंगे, देन इनपुट इन दी फॉर्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा आउटपुट के अंदर. ओके, सो आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए दे व्हाट दे डू, दे मेक द पॉलिसीज. ओके, so that policy is called the public policy, or we can say simply policies, and that portion is only called by the David Stone as a black box. Okay, so the system theory portrayed public policy as the output of the political system. तो ये आउटपुट जो है मेनली थ्रू द पब्लिक पॉलिसी हमें जो मिलता है, दैट इज द मेनली आउटपुट ऑफ द political system. Thus, in brief, the system model rely on the information from the feedback. Okay, feedback, input and output as being cyclical. Okay, तो देखिए अभी डिमांड मिला है उनको एज ए इनपुट, उसको थ्रू पॉलिसी आउटपुट के अंदर कन्वर्ट किया गया, फिर इसमें फीडबैक मिलेगा. सो फीडबैक मिलने के बाद फिर ये क्या किया जाएगा, फिर इसको एक फीडबैक एज ए इनपुट हो गया, फिर इसको आउटपुट में कन्वर्ट किया जाएगा. सो दिस इज जस्ट लाइक द साइक्लिकल. ओके, मतलब एक टाइप की साइकिल बन गई है, पहले इनपुट आ गया, फिर आउटपुट हो गया, फिर इनपुट आ गया, फिर आउटपुट मिलेगा, लाइक वाइज. ओके, दिस इज अ साइक्लिक. ओके, सो पॉलिसी इज ओरिजिनेटेड, इम्प्लीमेंटेड, एडजस्टेड एंड री एडजस्टेड. ओके, सबसे पहले ओरिजिनेट होगा, देन इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंट होने के बाद फिर एडजस्ट होगा, देन री एडजस्ट होगा, लाइक वाइज the cyclical process is continue. Okay, so this is mainly about the system model. Okay, system model for policy analysis, how system model work, that I already explained. Okay, देखिए सिस्टम मॉडल से क्या समझते हैं आप, जो इंस्टीट्यूशंस है, ओके, जो पॉलिटिकल सिस्टम की जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे मैंने बताया जो एग्जीक्यूटिव है, ओके, दैट इज द मेनली पॉलिसी मेकिंग. ओके, जो लेजिस्लेचर है दैट इज द पॉलिसी मेकिंग. ओके, तो जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ओके, जो पॉलिसी मेकर्स है, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, ओके, लेजिस्लेटर हो गए, जज हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, दे ऑल आर द पॉलिसी मेकर्स. ओके, सो हाउ दे इन्फ्लुएंस और हाउ दे मेक द पॉलिसीज, ओके, दैट इज मेनली डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूशंस. ओके, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो जज कैसे बनाता है, ओके, चीफ सेक्रेटरी कैसे बनाता है, और दी लेजिस्लेटर किस तरह से बनाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव किस तरह से पॉलिसी बनाता है, दैट ऑल डिटरमाइन, ओके, हाउ द पॉलिसी विल बी. ओके, तो मेनली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉलिसी किस तरह की होगी. तो दैट इज द सिस्टम मॉडल फॉर पॉलिसी एनालिसिस. तो हमने सिस्टम मॉडल के थ्रू हमने ये समझा कि पॉलिसी किस तरह से एनालाइज की जाती है. सबसे पहले क्या होता है इसमें, इसका अगर हम ब्रीफ ले ले एकदम, तो क्या होगा, सबसे पहले इनपुट लिया जाता है, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड एंड सपोर्ट. ओके, एंड इनपुट इज टेकन फ्रॉम द इंडिविजुअल और ग्रुप. ओके, तो जो सबसे पहले क्या होगा, इनपुट होगा. ओके, सो इनपुट कौन देगा, ये देगा बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, in the form of demand and support. So what is demand and what is support? Demand क्या है, एक प्रकार का क्लेम होता है. ओके, दैट इज मेनली क्लेम बाय द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ पीपल, एंड सपोर्ट is just following the rules, regulation or
giving the support by the symbolic or material input. Okay, so when input we provided, then what political system will do, they just convert it into the output. Okay, and output conversion is through the public policy, or we can say policy. Okay, then after giving the output, again we will provide the feedback. Okay, so we provide the feedback, again after feedback the policy will again modify and it will convert into output. Likewise, the policy analysis is continue, it is a cyclic process. So this system mainly tells all these things. Okay, so now we will see the limitations or limits, okay, of the system model. कितनी लिमिट है इस सिस्टम मॉडल की, ओके, दैट वी विल अंडरस्टैंड नाउ. The system model is useful aid in understanding the policy making process. Okay, policy making process को समझने के लिए हमें जो सिस्टम मॉडल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो हाउएवर फिर भी इट इज़ यूज इज लिमिटेड. ठीक है, ओविंग टू सेवरल फैक्टर, बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर इसमें कुछ लिमिटेड है. ओके, बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर दिस सिस्टम मॉडल, ओके, प्रोवाइड लिमिटेड, okay, limited understanding of the policy making process. So it is or that this input output model appear to be too simplistic. Okay, first limit, क्यों, because of the too simplistic. Okay, बहुत simple है, to serve the useful aid to understanding the policy making process. तो policy making process को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा simplistic है. Okay, this is one limitation, or you can say limit. This model is accused of employ the value laden technique of welfare economic. Okay, another shortcoming of the traditional input output model is that it ignore fragmentary nature of the black box. Okay, this is second limits of the system model, that is fragmentary nature of the black box. Okay, बहुत ये क्या करता है, बहुत छोटा जो ब्लैक बॉक्स का जो फ्रैगमेंट्री नेचर है, मतलब बहुत छोटा नेचर बताता है ब्लैक बॉक्स का. ओके, सो लाइनबेरी इन 1984 ऑब्जर्व दैट द फ्रैगमेंट्री मतलब छोटा, वन पार्ट्स. ओके, किसी भी चीज का एक पार्ट. सो ऑब्जर्व दैट political decision making are often constrained by economic factors in the environment in the political system. So Eastern model also ignore the fact that policy makers have considered potential in influencing the environment. This is second limit. A third limits. Okay, the policy makers have considered, okay, okay, the Eastern model is also ignore that the fact that the policy makers, okay, the fact, okay, they ignore policy maker ignore the fact that, okay, potential in the influencing the environment. Okay, so this is third limit. Then Eastern consider which model operating in the neutral structure, but critics are that structure variations in the system do have direct cause effect on the policy. So further it is that both political and bureaucratic elite fashion mass opinion more than mass shape the leadership view. Okay, this is the fourth. Okay, the political and bureaucrats elite fashion mass opinion more than the mass shape the leadership view. मतलब कि मास जो है, मतलब जनता है, आम जनता, वो लीडरशिप या पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक जो इलीट होते हैं उनके विचार को ये, मतलब उनके जो भी व्यू है, ओके, रिलेटेड टू द पॉलिसी, उनके जो ओपिनियन है उनको शेप नहीं कर सकते. दिस इज द मास. ओके, एंड दिस आर द पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स. तो ये लोग हैं, इनके विचार को या उनके ओपिनियन को शेप नहीं कर सकते, बट दिस विल shape the opinion of the masses. Okay, they are more powerful, these one are more powerful than these masses. So this is the limit. Okay, so for making the better policy we understand, okay, the masses. Okay, means जनता को समझना पड़ेगा, then only we can make better policy for the people. So although it is acknowledged that bureaucracy has become powerful institution and play a critical role, the bureaucracy is formulating policy. Input by way of demand and support tend to equally important in democratic context. तो देखिए ये दिस इज द फिफ्थ वन. ओके, ब्यूरोक्रेसी इन फॉर्मुलेटिंग
because bureaucracy playing very important role, but then also the view of the people, okay, because this is the democratic, okay, so democratic country need the view of the people masses, so that is, oh, okay, so the view of the masses will influence the public policy, okay, so therefore their view, okay, opinion of the masses is very much important for better implementation and better formulation of the public policy, okay. And here what is happening, the bureaucracy playing a very okay rigid role in formulating the policy than understanding the opinion of the masses, so therefore this is the fifth limit of the system model. Then finally it is stated that it is difficult to pinpoint, okay, the extent to which different inputs such as demand and support of the public, the influence from the environment and the value perception of the policy makers, okay. So this is also one of the limit, okay, this is sixth one, okay, very difficult to pinpoint, okay, हमें लिमिट ही नहीं पता चल रही how much input, okay, how different input, okay, demand and support, okay, that influence from the environment, okay, the limit we will don't know, so that is also the limit, okay, limit of the demand and support, okay, we don't know the demand and support limit, okay, of the public, so how much that influence, okay, from the environment, so that also we don't know, so this is also the one of the limit of the system model. So now we understand the limit of the system model and the system model, okay. So at last, on the whole, the work of the David Stern, although not regarded as a primary public policy, has made a vital contribution to the establishment of policy approach in the in in that it provided a system model for policy analysis. So this what about the system model, okay. So next video में हम cover करेंगे institutional model and public policy, okay. So that's all for this video. Thank you. Bye bye.